Hello everyone, my name is Karan Mashru. Welcome to this video. And in this video, we are going to see how you can insert a node at the end of a double linked list. Okay. So basically, for example, if you are having a double linked list 2, 5, 7, 12, 15, and the next of this is null, the previous of 15 is pointing to 12, this is pointing here, this is pointing here, this is pointing here, this is null, and this is the head of a doubly linked list. So you want to insert a new node at the end of a doubly linked list. So for example, you want to insert a new node with the value 100. So first of all, you will create this node and this will be pointed with the help of a pointer called temp, right? So finally, can I say the next of this node will be pointing to temp and the previous of this node would be pointing to this node? So for example, if this is current, then my current next would be pointing to temp. Okay, and when you create this new node, by default the next and previous of that would be null, right? So this would both be null. So current next would be pointing to temp, so this next would be pointing to temp, and temp previous would be pointing to current. Okay, so the previous of this would be pointing to current, so this will point here. So your doubly linked list is found, as simple as that. And then you return the head. Now how do you reach this node? So the next of this was null by default, right? So I will start my current with head. I would say my current is equal to head, and while current next is not null, I would say current equal to current next. While current next is not equal to null, if the next of current is not null, अगर null नहीं है तो हम कहेंगे current equal to current next. तो क्या होगा, करंट यहाँ पे होगा, इसका नेक्स्ट नल है नहीं है तो करंट यहाँ पे आ जाएगा, इसका नेक्स्ट नल है नहीं है तो करंट यहाँ आ जाएगा, इसका नेक्स्ट नल है नहीं है तो करंट यहाँ आ जाएगा, इसका नेक्स्ट नल है नहीं है तो करंट यहाँ आ जाएगा, इसका नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट नल था, सो वी विल कम आउट ऑफ द व्हाइल लूप. And after that we can execute these two things. So current next will point to temp and temp previous will point to current. Okay. एंड जब ये नया नोड क्रिएट करते हैं तो उसका नेक्स्ट तो और प्रीवियस बाय डिफ़ॉल्ट नल ही होता है, तो ये नेक्स्ट नल ही होगा, है ना. और इसका प्रीवियस तो हमने यहाँ पे पॉइंट करवा दिया, ये 100 का प्रीवियस 15 वाले नोड पे पॉइंट करवा दिया, तो ये हमारी डबली लिंक लिस्ट फॉर्म हो गई. ठीक है. एक कॉर्नर केस है जब आपका हेड खुद नल है ना. तो अगर लिंक लिस्ट इनिशियली एम्प्टी है तो करंट इक्वल टू हेड बोलोगे तो करंट भी नल होगा, फिर करंट का नेक्स्ट एक्सेस करने जाओगे तो एक्सेप्शन भी आ सकता है, क्रैश भी आ सकता है. ठीक है. तो अगर ये नल है देन यू कैन सिंपली से हेड इज इक्वल्स टू टेम्प, है ना, जो कि आपने ये नया नोड क्रिएट किया है, तो आपका हेड इसके बराबर हो जाएगा, टेम्प के बराबर, और इसका नेक्स्ट भी नल होगा और प्रीवियस भी नल होगा जब नोड क्रिएट करेंगे तो, एंड यू कैन सिंपली रिटर्न हेड. ओके. So that would be the idea. The time complexity would be big of n, as you have to traverse till the end of the linked list from head, and auxiliary space would be constant. Now let's implement the code. So what I'll do is I will copy the code for which I wrote for the traversal of a doubly linked list, and I will copy it for insert at the end dot cpp, एंड ईयर आई विल पेस्ट इट. ओके. तो मैंने इंसर्टेड बिगिनिंग कुछ ऑपरेशन की है, फिर ट्रावर्स किया है, तो पहले देख लेते हैं अभी करंटली आउटपुट क्या आ रहा है. ओके. डॉट स्लैश ए डॉट आउट. करंटली आउटपुट आ रहा है 100, 70, 50, 30, 20 एंड 10. सो इफ आई डू इंसर्ट एट एंड 1000, सो 1000 वुड बी इंसर्टेड आफ्टर 10, राइट. So head is equal to insert at end. As I said, for any insertion, deletion or modification operation will return back the head of the modified linked list. अगर modify होता है तो modified head आएगा, अगर modify नहीं होता है तो original head आ जाएगा. ठीक है. Then I would do traversal. Okay, 1000, or let's do one thing. I'll do this for 3 times. Okay. Not 1000, head. Actually I'm recording this video at 3 a.m. in the morning. Okay, so I hope you understand, I will make some mistakes like that. Okay, anyways,
So insert at end. Now let's write that function. So struct node star insert at end, struct node star head, and this is the element x. So first of all, you create a new node. Struct node star temp is equal to create a node with the value x, right? I hope we have written the create node function. Acha, here you can directly use new node. We are in C++. Okay, so you can use new node, and once you have written that, so now you can say if your head is null itself, then your head would be equal to temp and return head. Okay, and if that is not the case, then you say struct node star current is equal to head, and while current next is not equal to null, current equal to current next. ठीक है, तो हम जब बाहर आएंगे तो करंट लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट पे पॉइंट कर रहा होगा, तो करंट नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टेम्प, बिकॉज अब टेम्प लास्ट नोड हो जाएगा, और टेम्प का जो प्रीवियस होगा वो हो जाएगा करंट. ओके, and then we will return the head of the linked list, which will be not modified in this case. Head will be modified only when there is no node in the linked list. Okay, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये लिंक लिस्ट थी, उसमें हमने इंसर्ट एट एंड 1000 बोल दिया तो 10 के बाद 1000 आएगा, फिर इंसर्ट एट 2000 बोल दिया तो 1000 के बाद 2000 आएगा. ठीक है, देखो 100 70 50 30 20 10, 100 70 50 30 20 एंड 10, ये हमारे पास है, ये हेड है. अब हमने इंसर्ट एट एंड 1000 बोला तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, फिर हमने इंसर्ट एट एंड 2000 बोला तो 2000 आ जाएगा, फिर हमने इंसर्ट एट एंड 3000 बोला तो 3000 आ जाएगा, है ना, और इसका एंड नल होगा. तो अगर हम ट्रावर्सल प्रिंट करेंगे तो ये ऑर्डर होगा, 10 तक सेम रहेगा, फिर 1000 2000 3000. ठीक है, तो यहाँ पे इसको रन करते हैं अब. सो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ. ओके, एंड वी हैव गॉट 1000 2000 3000 एज एक्सपेक्टेड. तो हमारा इंसर्ट एट एंड फंक्शन जो है दैट इज़ वर्किंग फाइन. ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा. थैंक यू.